Atmosphere or air is another abiotic component of ecosystem. It's a non-living component of ecosystem. It means it is essential for the living organism because it contains those gases which are essential for the life of plants and the organisms on the earth. Air is a mixture of gases. How much? Like 78% of air consists of nitrogen, 21% of air consists of oxygen, while 0.03% of air consists of carbon dioxide. Although it's very small amount, but it is the one, this gas is the one which is important for conversion of light or solar energy into chemical energy. There are other gases which are present in the trace amount like krypton, argon, helium, methane and hydrogen. Air also contains the water vapors, the dust particles and the small microorganisms. If we see, there is a layer of the atmosphere. What we see is the troposphere. It means we can just see this layer of atmosphere, while there are another three spheres or three layers of atmosphere. We can see here like this. If this is the earth and we see only the troposphere. अर्थ से इस ट्रोपोस्फीयर का फासला तकरीबन 70 to 20 किलोमीटर्स तक है. मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और रेस्ट ऑफ द गैसेस जो हैं वो 1%. ये इस स्फीयर के अंदर कंपोजिशन कांस्टेंट रहती है. यही वो स्फीयर है जो कि लाइफ एक्टिविटीज जो कि अर्थ के ऊपर हैं, प्लांट हो या एनिमल्स हों, उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. यही वो स्फीयर है जहां पे वेदर या जो क्लाइमेट है उसकी डिटर्मिनेशन होती है. वेदर जो है वो किस किस्म का होगा, किस सीजन में कैसा होगा, क्लाइमेटिक इफेक्ट कैसा होगा, ये लेयर सबसे ज्यादा जो है वो डायरेक्टली क्लोजली जो है वो अर्थ के बहुत क्लोज है अर्थ के, लिहाजा ये तमाम चीजें ये लेयर जो है वो डिटरमिन करती है. नेक्स्ट लेयर इज नोन एज स्ट्रेटोस्फीयर. It is from the earth 50 kilometers above. ये वो लेयर है जिसके अंदर ओजोन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या है? 3 atomic oxygen molecules are combined together, that is known as ozone molecule. ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ओजोन मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत सारी सन रेज को जो कि हार्मफुल है उसको अर्थ के ऊपर पहुंचने से जो है वो रोकते हैं. लेकिन ये जो ओजोन लेयर है ये पोल्स के ऊपर, साउथ और जो नॉर्थ पोल पे है वहां पे बहुत थिन हो जाती है. वहां पर जो साउथ पोल है पहली दफा जो ओजोन लेयर है वहां पे एक होल जो है डिटेक्ट हुआ. वो क्यों? जो सन रेज हैं वो इस ओजोन के साथ मिलकर इसको डिस्ट्रॉय कर दी हैं. ये एटॉमिक जो नेचर है ऑक्सीजन की इसको जो कि अनस्टेबल है इसको डिस्ट्रॉय करेंगे और वहां पे एक होल सा क्रिएट हो गया है. इसको हम ब्लैक होल कहते हैं, जहां बहुत सारी जो हार्मफुल रेज हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए या ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो मुनासिब नहीं है, वो अर्थ तक जो है वो पहुंच नहीं है. यही वो जोन है जहां पे कि जेट जो एयरक्राफ्ट हैं वो मूव करते हैं. देन द नेक्स्ट लेयर इज मीजोस्फीयर. ये जो मीजोस्फीयर लेयर है ये हमारे पास तकरीबन अर्थ से 85 किलोमीटर्स तक जो है वो बनती है. 85 किलोमीटर्स तक. इसके ऊपर अगेन जो है वो टोफोस्फीयर थर्मोस्फीयर लेयर है. ये थर्मोस्फीयर लेयर वो है जहां पे जो है वो स्पेस शटल्स और जो वो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशंस वगैरह हैं वो पाए जाते हैं. ये आउटर जोन है एटमॉस्फेयर की. यहां से तकरीबन एटमॉस्फेयर का जो है वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जहां पे कि हम
ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں سے اسپیس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگی. تقریباً اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے 100 کلومیٹر تک جو ہے وہ ایٹماسفیئر کا حصہ ہے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے. اور یہ جو تھرموسفیئرز ہے یہ ابو 3 کلومیٹرز ابو دا گراؤنڈ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ اسپیس کی طرف آؤٹر اسپیس کی طرف جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. لہٰذا جو ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایٹماسفیئر ہے, یہ ایئر کی لیئر ہے, ہمیں جو آسمان سا نظر آ رہا ہے وہ ہم صرف ٹروپوسفیئر تک دیکھ رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہمیں صرف جیٹ کی سپر سونک آوازیں آتی ہیں وہ اسٹریٹوسفیئر کے اندر جو ہے وہ موو کرتے ہیں ایئر کرافٹ جو ہیں, اور وہ والی جو زونز ہیں جو کہ اس سے زیادہ بڑے ہیں وہ ہم دیکھ ہی نہیں پاتے, وہ آؤٹر اسپیس کے اندر چلے جاتے ہیں. کمپوزیشن جو ایئر کی ہے جو کہ ٹروپوسفیئر میں ہے وہ تقریباً میزوسفیئر تک مور اور لیس کانسٹنٹ رہتی ہے, جس میں ڈومیننٹلی جو ہے نائٹروجن زیادہ اور جو ہے وہ آکسیجن سیکنڈ نمبر کے اوپر آئے گی. لیکن جیسے ہی ہم میزوسفیئر کراس کریں گے تو وہ آؤٹر اسپیس یا اسپیس جو ہے وہاں اسپیس والی انٹرنس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی, جہاں پہ ہم جو ہے وہ ڈسٹنگوش نہیں کر سکیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو ایٹماسفیئر کی لیئر ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اسپیس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ اسٹارٹ ہو رہی ہیں.